Good morning, students. So, in the previous video, we have discussed the physical properties of metal and non-metal, and now in this video, we'll discuss chemical properties of metal and non-metal. Okay. So, how metal reacted with oxygen, we'll talk about that. So, almost all the metal combine with oxygen and form metal oxide. Okay. सारे मेटल आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगेन, इफ वी टॉक अबाउट कॉपर, इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. देन इफ टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म aluminium oxide. And you have seen the most common example of this with iron. If you kept anything which is made up of iron in outside of your house so that it can be exposed to air and water, then some brownish like substance covering is there on the iron, which is a rust. So when object which is made up of iron exposed to air and water, then iron come in contact with the air and water and form rust. Okay, so what happened? Iron react with oxygen in the presence of some moisture in it, and it form iron hydroxide, and which on dehydrated form rust. Okay, this is the reaction for rust, and this is rust, Fe2O3.NH2O. Okay. Now, not only the iron but all other metal also form rust. For example, if you're talking about copper, it also form rust. Have you seen, if you put some water in a copper bottle for some days, then after some days you'll see some greenish like substances are covering over there, and that is also a rust. If copper react with moist air, it contain water, some little moisture, oxygen and carbon dioxide, and it again form green color rust, CuOH2 plus CuCO3. So these are all reaction with oxygen. So again, one question arises, are metal oxide or acidic or basic in nature? So if you want to find out the nature of a substances, you need a litmus paper, and there are two kind of litmus paper, red litmus paper and blue litmus paper. So red litmus paper changes into blue when the substance is basic, means that the nature of a substance is basic, and if blue turns to red, that means it is acidic. So here, dip the paper in the solution and change the color of the paper shows whether the solution is acidic or basic. So if we are talking about metals, when it react with oxygen, it form metal oxide, and we have to find out whether the metal oxide is basic or acidic in nature. So what you do, just take a magnesium ribbon, burn it, okay, and you found a ash, that is magnesium oxide. Okay, when magnesium react with oxygen, it form ash, which is magnesium oxide. And then when you just mix this ash with water, okay, it form magnesium hydroxide. So if you want to find out the nature of this magnesium hydroxide, let's dip the red litmus paper, and you find out that red litmus paper turns to blue, and this shows that the the solution is basic in nature. Understand? तो वो क्या होता है कि सब्सटेंस क्या है, बेसिक है नेचर में. ओके, क्योंकि रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. अंडरस्टैंड? नाउ this is all about when metal react with oxygen. Now what happen when non-metal react with oxygen? So the same non-metal when also react with oxygen form oxide. For example, if S react with O2 give SO2, C react with O2 give CO2, and H2 react with O2 give H2O. Again, a question arises like are metal oxide is acidic or basic? Same again, are non-metal oxide acidic or basic? अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि नॉन मेटल एसिडिक होता है या बेसिक. तो अगेन आप क्या करेंगे, let's take some SO2 with water reacted with, and what you found that it formed H2SO3. Again, if you react CO2 with H2O water के साथ mix करके, it form H2CO3, and both are acid. This is sulfurous acid and this is carbonic acid. And if you want to check it out with litmus paper, use blue litmus paper, then you will see that blue litmus paper turns red. This means that they both are acidic in nature. So what happened when metal react with oxygen, it form metal oxide, which is basic in nature. Understand? And when non-metal react, it form the substance which is
acidic in nature. Non-metal react with water. Understand? So we'll talk the reactivity of other metals also. So different metals shows different reactivity towards oxygen. ओके सारे के सारे मेटल की टेंडेंसी सेम नहीं होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की. ओके सो इफ आई टॉक अबाउट KNNA मीन्स पोटेशियम एंड सोडियम, so they are very fast, vigorously react with oxygen. Okay, they catch fire in the air also. Okay, but if we talk about iron, so it does not react so much, मतलब इतना फास्टली इतना वाइग्रेसली रिएक्ट नहीं करता है. अगर मैं ये गोल्ड और सिल्वर की बात करूँ तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते इवन एट हायर टेम्परेचर ऑल्सो. ओके और अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की, तो दे ऑल कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. सो दिस शोज दैट डिफरेंट मेटल रिएक्ट डिफरेंटली विद ऑक्सीजन. ओके डिफरेंट मेटल्स जो है डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, सबकी अपनी टेंडेंसी. नाउ अभी तो हम बात कर रहे थे हाउ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, से मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बट नाउ विल टॉक रिएक्शन विद वाटर. So if we react metal with water, it form metal oxide plus hydrogen gas is released, and when this metal oxide react with water again it form metal hydroxide. Okay, आपको याद रखना है कि all metal do not react with water. सारे के सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं पानी से. ठीक है, सबकी अपनी टेंडेंसी होती है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा वाइग्रेसली रिएक्ट करते हैं, तो अगर बहुत ठंडा पानी भी है या तो वो तब भी रिएक्ट कर जाएंगे और इट कैचेस फायर बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म NaOH प्लस H2. ओके एंड अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी और इतनी हीट एनर्जी रिलीज होगी कि हाइड्रोजन में जो मॉइस्चर होगा उससे भी वो फायर कैच कर लेगी. ठीक है, सो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है sodium and same as potassium also when react with water it form potassium hydroxide plus oxygen and heat energy. okay so उसके बाद हम नीचे आते हैं कैल्शियम की तरफ. तो कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, बट वो इतना ज्यादा वाइग्रसली रिएक्ट नहीं करता है जैसे कि सोडियम और पोटेशियम करता है. ठीक है, सो इन दिस केस रिएक्शन इज नॉट एज मच वायलेंट एज इन द केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. अगेन मैग्नीशियम, अब हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है. इट रिएक्ट ओनली विद अ वार्म वाटर. ओके एंड इट अगेन फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. अब फिर हम अगर बात करते हैं एल्यूमिनियम एंड आयरन की, तो आप देखेंगे कि डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. ये ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, बट ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं. okay that means they are not as violent as compared to sodium and potassium. जैसे कि वो इतने वायलेंट है, ये नहीं है. अंडरस्टैंड? सो सबकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबकी अपनी टेंडेंसी होती है. एल्यूमिनियम अगर या आयरन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 3H2 और Fe3O4 4H2 बनाता है. फिर हम और नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आपका आता है लेड, कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर. सो अगेन ये तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से. सो क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप पे हैं सोडियम एंड पोटेशियम, वो बहुत जल्दी वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं. दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर ऑल्सो एंड इट कैचेस फायर ऑल्सो. एंड इफ यू टॉक अबाउट कैल्शियम, इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, दैट मीन्स दे आर लेस वायलेंट. बट इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीशियम, इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर. If you talk about aluminium and iron, then it react only with steam. And if we'll talk about Pb, Cu, Ag and Au, lead, copper, silver and gold, then it do not react with water. Okay. And what happen when non-metal react with water? देखिए non-metal they do not react with water. Even if I'll talk about phosphorus. Phosphorus react with oxygen. Oxygen, do not water. I'm not talking about water. If phosphorus, which is a non-metal, react with oxygen, so it catches fire. ओके वो फायर कैच कर लेता है बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल. लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फायर कर लेता है. लेकिन अगर इसी की रिएक्शन, नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराऊं तो वो रिएक्ट नहीं करेगा. इसीलिए जो फॉस्फोरस ऑक्सीजन में, एयर में फायर कैच कर लेता है, उसको हम कहाँ पे प्रिजर्व करते हैं? वाटर में. ओके दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, इसलिए उसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है. सिमिलरली जो मैंने आपको एक चीज मैं भूल गई हूँ, विच आई वांना लेट यू नो दैट सोडियम एंड पोटेशियम विच इज हाईली रिएक्टिव
सो इट ऑलवेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए लेबोरेटरी में उसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो फायर कैच कर लेगा, इसीलिए उसको जो है कैरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। एंड फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल जो ऑक्सीजन के साथ वाइग्रसली रिएक्ट करेगा, इसीलिए उसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? So some few topics are left which I'll discuss in next video, and I have provided question answer of this chapter, metal and non-metal, which you have to write down. Just write down all the question answer in your notebook and click the it picture and submit in the next homework worksheet. Okay, thank you.